We use this whenever we see that our okay, I got the message. Good, okay, good Lord. For ordinal. What is the meaning of ordinal? Wait, what ordinal? See, it is very easy to find out. We have qualitative data in ranks. Okay. No, no, the problem is why we use this Spearman. Whenever your data is, you can say it is correlated, but the relation is a little bit non-linear. It is like a polynomial like line you see here, right? Which is non-linear. If your data is like very straight line, it is very easy to find a correlation with the help of Pearson, covariance, and all that. But if what if it is non-linear, what we will do? On that scenario, what we will do? We will use this Spearman. Correlation known as Spearman rho is a non-parametric measure of rank correlation. All right, so it's written for linear relationship. Pearson is best, but for the non-linear, we have to do Spearman. So how to figure it out? Okay, I will explain it in a very easy way. Okay, so there is a few steps which we have to follow to to figure this out. I'm writing here. Steps to calculate Superman Spearman row. Rank the data, calculate the rank difference, square the rank difference, sum the squared rank difference, and apply the formula. So we have some formula also to calculate it. For example, yes, the formula is given here. Let me write it here and let me write the formula here. So this is the formula we have to use. Rho is equals to 1 minus 6 and summation of d square and n, which is n square minus 1. N is the number of data we have, right? And d is the difference
So how to calculate? I will be doing it with the help of sample data. Suppose we have X, we can say, yes, we have X, and we have Y. तो कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स हो गया, वाई हो गया, आपके पास एक्स कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे मे बी, बट इट can't rank correlation coefficient we use for linearly correlated variables. It can be used, but it works better for this non-linear. Yeah, suppose your x is like this. So what you have to do? You have to find a rank of x. So first of all, you have to sort it. Okay, you have to sort your x. Then, according to the numbers, the lowest number you have to give the rank 1. Then second highest should be 2, 3, 4, like this. Okay, and maybe your this data could be any 2001, 2020, 2030, and we can say 245. Okay, so now you have to give the rank against to the y. Like the lowest you can give 1, like this is 1, then 2, and then third lowest is this 230, like this, and then we have 245, which is we can say 4, right? So you have calculated the rank. So this is a rank, and this is the sort, you can say sorted F. Then we have to find a X Y. Yes, the difference of the rank, which we call D. Okay, so you have to subtract this. So this is 0, 3 minus 2 minus 1 minus 1, 3 minus 2 1 0, like this, right? We have done the difference. This is a difference of what? Can you write in the chat if you have understood it? किस चीज का डिफरेंस है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा? डी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। रैंक निकाल लिया हमने, कैलकुलेटर रैंक डिफरेंस वो भी किया, विच इज डी। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हैव यू जॉइन लेट? वाओ, प्लीज जॉइन ऑन टाइम. You can see the recording. I'm okay. There, I have explained it very nice from the beginning. And don't join late, please. D. What is D? The difference between x and y, and then you have to do d square, like this, right? D square means you have to sum this one, d. So you did the square of this, and last sum the square difference. You have to do the sum of d square. This one, like for this case, it is 2. So this is our d square.
then apply the formula. The formula is this one, 1 minus 6 into, we can say, d square. The summation of d square is 2, and n, how much value we have? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Good, very nice, Nikhil. Then 4 square minus 1, right? Calculate it and tell me the value. 0.8, okay. So it is related, we can say 0.8 is a good value. So you can say it's a positive relation, right? 0.8. So this is how we figure out the Spearman correlation. So those who are writing, they can write your notes, whatever. Okay, let me just give you 1 minute. Then I will start the next topic. Okay, next is we can say Z score. Have you heard about this topic, Z score? अभी तक तो आपको ये बहुत हैवी टॉपिक लगते होंगे, बट फ्रॉम नाउ ऑन इट विल बी वेरी इजी. Z स्कोर, इनके नाम ही खतरनाक है, बाकी कंसेप्ट वेरी इजी. ये yes, hypothesis testing, yeah, is one of the hypothesis testing. Basically, we can say that a Z score, also known as the standard score, measure how many standard deviation a data point is from the mean of the data set. It allows for comparison from different distributions. इसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि आपका जैसा ग्राफ है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ, ये आपका मीन है. तो कोई भी पॉइंट एक, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, यू कैन से.
तो कोई भी पॉइंट, हाउ मच इट इज हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। ठीक है। बेसिकली जेड स्कोर इज यूज टू फाइंड आउटलायर्स। अगर आपका जो कोई भी डेटा पॉइंट है, अगर बहुत ज़्यादा दूर है आपके आपके मीन से, यूजुअली 3 जेड स्कोर तक लिया जाता है। मीन्स दिस जेड स्कोर बाय 3, यहाँ तक। इसके बाद जितनी वैल्यूज होती है दैट इज कॉल्ड अ आउटलायर। ओके। आउटलायर, आउटलायर्स मीन्स इट इज वेरी एट डिस्टेंस फ्रॉम योर मीन, दिस वे। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर है, एटलीस्ट आप कह सकते हो 1 2 3, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद है, तो वी कॉल इट आउटलायर। ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल डेटा है तो फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, वी कैन। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज वेरी इजी। स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस व्हाट आई क्यों निकालते? हाँ मतलब यस सर बोल रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ क्यों निकालते हैं। रीजन, रीजन। टू चेक द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा, टू फाइंड आउटलायर्स, उमेर राइट। व्हेन द वैल्यूज आर डिस्पर्स्ड अ लॉट फ्रॉम देयर मीन। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। मतलब आउटलायर, बेसिकली आउटलायर्स के लिए यूज होता है इसमें। डेफिनेशन में लिखा नहीं है वैसे ये, पर टू फाइंड आउटलायर, तो हमको पता कैसे चलेगा कि आउटलायर से बाहर है? तो आई विल टेल यू। बॉक्स प्लॉट नहीं, बॉक्स प्लॉट से नहीं। बॉक्स प्लॉट तो दैट इज द ग्राफ वे। हाउ वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस वन फॉर्मूला। See this, we have whole information over here. 1/3 of the quartile distance, right? Interquartile range, a maximum z score value which out of the limit 3j. हाँ right, correct. Very technical answer, very nice. What is written here? You can see key points about the z score. Standardization. Z score standardize the data point allowing for comparison across data set. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है मैं अभी कवर करूंगा।
और इंटरप्रिटेशन क्या है कि z स्कोर ऑफ 0 इंडिकेट्स द डेटा पॉइंट इज एग्जैक्टली एट द मीन, 0 होगा तो मीन पे ही है। पॉजिटिव z स्कोर indicates that data point is above the mean, मीन से ज्यादा है। एंड किस रेंज के हिसाब से होनी चाहिए, टिपिकली द मोस्ट डेटा पॉइंट्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स प्लस और -3, राइट। आपका डेटा में ये आपकी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके बाहर अगर डेटा आपका गया तो दैट इज दिस इज योर +-3 standard deviation from the mean, resulting the result score with the range of approximately -3 or 3. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे how we are getting standard deviation value like 1, 2, 3. Usually in our data we have like 4, 5 or greater values, you can say. So how we are getting 1, 2, 3, something like this? See, we are doing standardization. Okay, standardization means अपने डेटा को we convert in such a way that ki this standard deviation is only one. Okay, तो वो कैसे करते हैं, I will just discuss. For now you just understand the range of the outlier. तो जिसको समझ में नहीं आया बता सकता है। ये देखो मेन पॉइंट यहाँ लिखा है आउटलायर्स, डेटा पॉइंट्स विद द z score beyond +3 are often considered as outliers. Outlier means exception. We will take some question. There is one formula, let me show you this one. Okay, so how we will solve it? First read it. अब फॉर्मूला भी आप याद रखो, बगल में लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर योर हेल्प। Yes, sir, range. Sir, can you explain the range again? Range this one. कुछ नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रेड कलर से समझाता हूँ आपको। इस आपका डेटा ये है, ये ठीक है, और 1, 2, 3 जितना भी एरिया है जो आप देख रहे हो रेड वाला एरिया, दैट इज 1, 2, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे। यहाँ पे अगर वैल्यू पड़ी, यहाँ पे या यहाँ पे, दैट इज आउटलायर। Okay, suppose we have a data set with a mean mu 100
ठीक है, मीन हमारा हो गया 100 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यू कैन से सिग्मा is 15 and we want find the z square. मीन दे रखा है और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है, निकालो 130 का, आपकी वैल्यू है 130, सो हाउ वी कैन डू फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, वेरी फास्ट आंसर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, दैट्स व्हाई। ओके ओके, टू, okay, so tell me, is it outlier or not outlier? Suppose this is your data and first falling on the line of the your second deviation, which is not outlier. Fine, not outlier. Wait, पाइथन से भी कर सकते हैं क्या हम उसको? बिफोर वी डू विद द पाइथन, सबसे पहले लेट मी टेल यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस, कि मतलब रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। ऐसे तो कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, बट रियल लाइफ में भी तो यूज होगा, और रियल लाइफ में यूज ही है। Z-score are used in various statistical analysis including स्टैंडर्डाइजिंग करना, मैं पढ़ाऊंगा भी क्या होता है, आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स, डिटेक्टिंग डेटा पॉइंट, आउटलायर्स का बता ही दिया मैंने आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द to fit a normal distribution। हाँ, राइट। जितने आपके डेटा में आउटलायर्स बाहर रहेंगे उतना बेटर है। हाउ टू डू विद द पाइथन, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी।
import numpys and import scipy as stats का यूज होगा इसमें. तो suppose this is your data, 100 102 98 105. कोई आउटलायर तो इसमें दिख नहीं रहा वैसे. तो मीन निकाला उस डेटा का, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला. ठीक है. तो वी आर मेकिंग अ लिस्ट. The formula is x minus mean and divided by the standard deviation. फॉर्मूला था उसमें, राइट. और यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं हम. तो just 1 minute, let me, before printing all this, let us print z score. See, it is calculating the z score of all the values. Let me do the round because I think it is too much. It is producing too much. What we say? Up to 2 decimal point, I am rounding it off. Yeah. Minus 0.3, 0.13 t. अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1000 डाल दिया, तो 1000 का what is the z score of this 1000 value, this one? तो ये आपको लगता है कि इसमें आउटलायर है? 3.16, yeah, right. This particular value is outlier. You can write the code also. uh, for I in, yes, your z score, you can write if your I is greater than 3 or less than 3, then it is, we call it, will not print the I, will say that there is some outliers in our data. So it is saying there is some outliers in our data, right? So if I remove it, so maybe I can like make it normal data, then it will not say that. See, in the else part I can write there is no outline in our data. Yes. But if I put some outlier, it will say there is no outlier. There is some outlier in our data. I did break. Okay, it is still running.
Let's put it only like this. Fine, 3.6. I hope you have understood it right. Z score is was easy, right? Okay. शॉर्टेस्ट वे इसका ये है, हमारे पास एक बिल्ट इन, जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था scipy stat, so let's use this one also now. Simplest thing is we can say कैलकुलेट जेड स्क्वायर यूजिंग scipy. scipy में हमारे पास स्टैट्स के अंदर एक ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, आपको इतना मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, वी हैव बिल्ट इन फंक्शन, याद रखना, मे बी आपको याद है, यू हैव टू यूज इट इन द फ्यूचर. जेड स्कोर scipy, अपना डेटा पास किया तो आपको डेटा ऑलरेडी वो बता देगा कि यहाँ पे यू हैव द आउटलायर्स और नॉट. सी 3.16, दिस इज आउटलायर्स, कैलकुलेट कर देगा वो सबका आपका जेड स्कोर, ठीक है, बाकी आप देख लेना कि उसमें आउटलायर है कि नहीं. व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल इन विच वी हैव दिस जेड स्कोर फंक्शन? लाइब्रेरी का नाम क्या है, सॉरी मॉड्यूल का नाम? एनीवन? हेलो? यस. आ सी बॉन. आप अभी तक सी बॉन में हो? चलो बहुत हो गई बातें अब, और नेक्स्ट, लेट मी सी. ओके, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, ठीक है, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन. So I'm writing here in the this is the question. Take 5 minutes and give me the answer very fast.
1.5. Okay, very nice. So what do you think? Like, is it outlier or not? वो भी बताओ. Calculate the Z score for the student score. ठीक है. Yes, not. Okay, fine. Next is what we have. Okay, next question is sorry. Next topic is what we have. Next is normalization. तो बिफोर वी डू दिस नॉर्मलाइजेशन तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता क्या है आई नीड टू टेल यू दैट फर्स्ट. तो कभी कभी क्या होता है ना कि डेटा में वी हैव अ लॉट एज यू कैन डिविएशन है ना. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि सपोज दिस इज अ डेटा. some data is very large, some data is very small, right?
even in the negative side also we have very big or small data, right? So what we have to do, we have to convert it in a very normal way, right? So what we will do, removing outliers and then non-important data and removing noise. Yes, fine. We will do कि इसमें हम एक common चीज सब data में से we will subtract, okay, so that we do not get a peak like this one, which is right, so that you see some data like this, very normal, not very extreme data. So what we will do, we will subtract the mean to all of the data. ठीक है, mean हम minus करेंगे, we will get the very normal curve, very normal data. All right. So let me see if I have some kind of animations. I will tell you. I can show you. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे होता क्या है कि we know in our data कि this one is some magnitude and this one is also magnitude, right? So basically in data we don't need actually the magnitude, right? हमको बस ये चाहिए कि ये इससे कितना बड़ा है, फॉर एग्जांपल, राइट? अगर मैंने अपना एक्सेस यहाँ रख, जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पे था, अगर मैंने एक्स एक्सिस यहाँ रख दिया, ये जीरो हो गया और ये यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा के हिसाब से अगर यहाँ पे देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल सपोज दिस वाज 3 7, so 3 or 7 is like a real values, right? But what if we make it normal? What if we convert normalization? If you do, so you can say I will subtract mean to it. Maybe subtract mean can be anything. So like now this data will become here 0, and you decrease the 3 in the 7 also, it became 4, right? So the ratio is still same in the on the both data, right? But the magnitude will change, right? So basically what happens, we don't need the real values, we just need the ratio, right? कि कौन किससे कितना बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल अगर we compare the size of the sun with the earth, this is earth and this is sun, we don't want the real value ना. real value तो अगर मैं बोलूँगा कि it is 13 lakh times, maybe size of the earth could be anything like 10, or the size of the sun could be like 10 lakh, right? It could be anything, but we don't know we don't want the real value, we just need the ratio, कि रेशो के हिसाब से बता दो कि कितना ज्यादा बड़ा है सन, राइट? वी नीड द रेशो, so that is the thing. So normalization is like adjusting your data.
if somebody have the okay, I have this one. Let me copy image address. Let me show you this GIF means animation. Let's see this. When see this is off. This is normal data. When we normalize, it become like this. See, just 1 minute. All right. So this is normalization. So I will cover this in the next session. Okay, how to normalize it and all. See, we will do in the next session. All right. So have a good day. Bye bye. See you soon. Nice. Thanks for joining.